Day 32 New York session, live gold trading. Welcome back. Exactly. We are so back. Let me just quickly share the link with the people and everyone in the community. Okay. Nice. Gold is moving nicely. There is a resistance above that level, so we need to be careful about that. We'll go from the beginning. We go from the beginning. Also, like morning में भी हमने एक session लिया था. We did trade in the morning, and it was a nice session, I would say. बढ़िया था. No stress, nothing. Okay, I got the notification. Let me share this. Join कर लो फटाफट. दो तीन दिन से I'm learning so many things. Okay. उस पर मैं focus कर रहा हूँ. And I'm learning new strategies, new things, right? Because सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए. समझ रहे हो? सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए. जिस दिन तुम सीखना छोड़ देते हो, दिन उस दिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. So yeah, I'm still learning. Like, you know, we always like every other trade that we take, it's a win, but still I'm learning daily about the market, that how market behaves. I'm doing like, I'm attending boot camps and doing this and that, everything that I'm doing in my capacity. ठीक है? चलो. Is everything right? Okay, cool. शुरू करते हैं. Okay. Definitely gold is on fucking bullish move, right? You are able to see all-time high that is right here, right? Market is moving to that all-time high. Okay, there is no liquidity sweep to that all-time high, so we are not gonna pressure on that, right? So what am I focused on? I'm focused on a bullish direction, and that is what is market is giving me right now. Second thing, we are going to 1 hour time frame. You see that there is a good support level that market is trying to create here, but ये जो level है इसका liquidity sweep भी तो हुआ नहीं है. So right, you might see a good rejection off of this area. ठीक है? You might see a good rejection off of that area. Happy Republic Day, dude. Happy Republic Day, buddy. For you, waiting for you. Thank you so much, man. Thank you so much. Really appreciate that. चलो, जो लोग आ गए फटाफट join कर लो. And this is how we gonna trade fucking gold today. Good level. ठीक है, मैं मानूंगा यहाँ से हमेशा रिजेक्शन आया है एक्सेप्ट दिस कैंडल. ओके, यहाँ पर जब मार्केट हमेशा इस तरीके का क्रिएट करता है, वी नो व्हाट मार्केट डज हियर. ओके, मार्केट डज गो टू दैट लेवल, टेक आउट सम स्टॉप लॉस. इट्स नॉट गना फुली लिक्विडेट. इट विल. ओके, इट माइट. ठीक है, हो सकता है ये पूरा ये फिल तुमको देखने को मिल जाए. कल ही आई थिंक आई वाज स्टडिंग अबाउट दिस. yesterday only I was studying about this. समझ रहे हो? So yeah, good level. So what is the level that we are focusing on? This is a level, right? This is TP. हमें ये चाहिए. This is my level. Okay, this is a level that I'm focusing on, and once it's gonna come down, because there is a liquidity, but this is a liquidity pool, dude. This area is a liquidity pool. Market has to come to this level after it's gonna take out the buy side liquidity. Simple. Good resistance, and ठीक है, ठीक है, अच्छा पोजीशन है. कृष्णा, what's up कृष्णा? You welcome back, brother, after a long time no see. $15. Okay, it was a manipulation. Okay, manipulation. You see that यहाँ से breakout हुआ, came down but did not sustain, quickly moved up. Okay, and इस level पे इसने distribute किया. So completely manipulation. बहुत लोग इसमें फंसे होंगे, I'm pretty sure. So yeah. So what we are looking for right now, I'm looking for this high. ठीक है, ये हाई अभी तक नहीं होगा.
ओके, इसको बाहर नहीं निकलेगा मार्केट। आई एम लुकिंग फॉर दिस हाई, अभी क्विकली इट विल कम टू दिस हाई एंड इट माइट टेक दिस लिक्विडिटी, बट वही है, हमें पता है दैट मार्केट इज़ गोना कम टू दैट लेवल, बट कब और किस तरीके से आएगा दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से हो सकता है नीचे आ जाए, बट जस्ट बिकॉज हो सकता है वी कैन नॉट गो फॉर इट। द मेन थिंग इज़ दैट वी नीड टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ सेटअप, सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसको प्ले आउट करके हम एक सेल साइड के लिए प्लेस कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी कैन नॉट डू दैट, राइट। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यू विल बी एबल टू सी अ गुड कैंडल, ठीक है। दिस इज़ अ इन्विटेशन टू द सेलर्स, ओके, दिस इज़ अ कंप्लीट इन्विटेशन टू द सेलर्स, और यहाँ से सेल नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सिंपल। यहाँ से एक डबल टॉप क्रिएट करने की कोशिश, डबल बॉटम की क्रिएट करने की कोशिश की, दैट डिड नॉट हैपन, लाइक SMT, ओके, नाइस। 2 मिनट बचे ये वाले कैंडल में, गुड W पैटर्न, इट वर्क्स, बेसिक है बट काम करता है, हमेशा काम करता है। हेलो इनर ब्रो, व्हाट्स अप, कूल, ठीक है। व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन, ओके, हम इंटरेस्टेड है ये वाले लो में, ओके, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, आई एम डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन दिस लो, ठीक है, दैट्स इट। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट लो, 2 लोज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एट दिस पॉइंट। लेट मी सी व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, 1 मिनट पे यू विल बी एबल टू सी दिस, ठीक है, रिवर्स हो रहा है वहाँ से, होगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब एक ट्रेंड लाइन फेल होगा, उसके बाद विल गेट सम कन्फर्मेशन दैट व्हाट रियली मार्केट वांट्स टू डू। और ये वाला गैप याद रखना, ये अलग तरीके से फिल आउट होगा, ये वाला गैप याद रखना, ठीक है। इट इज़ बुलिश ओवरऑल, सो बेरिश में ट्रेड लेना थोड़ा यहाँ पर डाइसी हो सकता है। द ओनली थिंग इज़ दैट अगर हम बेरिश स्ट्रक्चर में भी जाते हैं तो बेरिश में भी हमें थोड़ा एक अच्छा खासा जोन या लिक्विडिटी पूल कुछ ढूंढना पड़ेगा। डेफिनेटली मार्केट वांट्स टू गो डाउन, राइट, इट विल गो डाउन बिकॉज देर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी एट दिस एरिया, right, this is the area that market has a lot of liquidity pending and it has to go to that level and take out those sell side जो भी है stop loss, right, so yeah, buy side stop loss I mean, good, ठीक है। it entered into this FEG, how many gaps are there, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है let me see कितने gaps है नीचे, ठीक है। अगर मार्केट जब ऊपर जा रहा है, अगर नीचे गैप नहीं रखता है, देन दैट इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू मूविंग हायर, ओके। नो गैप, देर इज़ अ गैप हियर, ओके, लेट मी रिमूव दिस, देर इज़ अ गैप हियर, ठीक है। 5 मिनट पे देर इज़ अ गैप एंड देर इज़ नॉट नो अदर गैप, सिंपल, एक ही गैप है एंड आई थिंक 15 मिनट पे भी वही गैप है, ठीक है। सो इसीलिए, और ये वाला जो लो है कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू सी दैट दिस लो इज़ इन दिस गैप, ओके। ये जो लो है, मैं इसीलिए इस लो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ बिकॉज ये पूरा इस गैप में है, दैट इज़ वाई दिस लो इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ओके। अगर ये किसी की गैप में नहीं होता देन आई वुड हैव नॉट कंसिडर दिस लो, बट इट इज़ इन दिस 15 minute gap, so I think market is gonna come to that level very much, very like soon, ठीक है। nice rejection on 15 minute, this can be the next move, okay।
अगर इस तरीके से मार्केट प्ले आउट होता है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, तुम समझ रहे हो। अगर इस तरीके का मूवमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, जो कि आई डोंट थिंक सो द मार्केट मेकर्स एंड द पीपल who are trying to manipulate and like take out some profit, they won't like it. So ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा ये वाला मूव, तुम समझ रहे हो। बट वही है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, सो वी माइट एबल टू सी दिस राइट नाउ। बट वही है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस पे, तो देर इज़ नो कन्फर्मेशन एज ऑफ नाउ, सिंपल एज दैट। ओके, जो मैंने ड्रॉ किया था इसको मैं एक बार हटा देता हूँ एंड विल सी। ओके, स्टिल रिस्पेक्टिंग दैट लाइन, तुम देख रहे हो। फोकस ऑन दिस, ठीक है। दिस इज a 1 minute gap that market is trading into that gap, but it is rejecting every single time. This candle got rejected, this candle got rejected, this candle got rejected, and this candle is trying to move up, but it also got rejected. So that means that market wants to break out from this area. Okay, so and अगर इसके अंदर ट्रेड करता है, then it is gonna inverse into that fair value gap. That means that market wants to go up continuously. ठीक है, so there are two probabilities here. Also there is this high. Okay, हो सकता है यहाँ तक आए एंड देन यहाँ से भी रिवर्सल का चांसेस तुमको यहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है। अगेन फोर्थ, दिस इज लाइक अ फिफ्थ कैंडल जो कि वहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, फिफ्थ कैंडल। सो नोटिस दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद को एक बार छोटा कर दूँ, बहुत बड़ा हो गया। येस नो मे बी। ऑल्सो जो लोग देख रहे, टेल मी इफ दिस बैकग्राउंड इज नाइस और प्रीवियस वन वाज नाइस। एक बार बता दो मुझे, दिस इज नाइस और प्रीवियस वन। सी इट डिड क्लोज above the previous one. It wants to go up. Oh, it came down, nice. Breakout. Okay, breakout हो सकता है, बॉडी आई थिंक रिवर्सल होगा, बॉडी ऊपर क्लोज करेगी, सो दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी, दिस वन। थैंक यू सो मच। बाकी लोग फटाफट बताओ बैकग्राउंड, दिस प्रीवियस वन, दिस प्रीवियस वन, दिस प्रीवियस वन, बताओ। लेट्स गो। ओके, रिजेक्शन, नाइस रिजेक्शन। देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है इस ट्रेंड लाइन को। द ओनली थिंग इज दैट इससे ये जाहिर होता है कि this trend line has some sort of power that it is holding right now, so इसको हम यूज कर सकते हैं in the future. That's it. Also अगर तुम देखोगे ये वाला लोड, definitely there is no gap here, but there is a gap here. Okay, there is a gap here. सो अगर इसको टैप इन करता है, देन ये देखने को मिल सकता है, समझ रहे हो। ब्रेकआउट ऑफ दैट 1 minute जोन, एंड द रीज़न तुरंत ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं प्लेस कर रहे, बिकॉज इट कैन बी अ मैनिपुलेशन, ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक पुश करेगा, इस लेवल तक। ठीक है, रिवर्स्ड।
नेवर ट्रेड व्हेन द मार्केट इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है? जब भी इस तरीके से अगर मार्केट एक्ट करता है, नेवर ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज और जोन्स, इट्स नॉट नाइस, ओके? It can take out your stop loss very easily, so do not trade when market is acting like this. That is it. Just a second, guys. Focus on this. Okay, you saw that? Boom! Boom bakla. Okay, went up. Breakout, but not really. समझ रहे हो? Breakout, but not really. इसलिए मैंने बोला था यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, बट इट इज़ अ इन्विटेशन टू द सेलर्स एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, ठीक है? इट कैन बी अ डबल टॉप, इट कैन बी अ रीटेस्ट एंड इट माइट फॉल फ्रॉम दैट लेवल. You are getting my point, but the overall structure is bullish, so we are not going for any bearish structure, or we are not thinking about the bearish trade right now, okay? Because this can be this can sweep out this area and might come down from that area. You see that? तो इसीलिए थोड़ा वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे लेवल पे अगर तुम बाय सेल या कुछ भी करते हो, देर इज़ 50-50 चांसेस, ठीक है? ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. यू गाइज, यू ऑल नो दिस. ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी होता है, बट उस प्रोबेबिलिटी को 70-30 या 80-20 किस तरीके से हम बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज seeing at the history and whatever the knowledge we have about the trading and price action and ICT, SMC, whatever it is, ठीक है? It's all about probability, but probability में भी percentage बढ़ाना, that is trading, simple, ठीक है? All right, यहाँ से could be a rejection, 1 2 3 4. यार I think ये यहाँ से breakout दे सकता है. The only thing is that it has tested that area multiple time, and now that area is breakable, okay? Because यहाँ से अच्छा move कर रहा था, market is going up down, अच्छा support resistance, good supply demand zone. Now it does want to like break out off of that area, I feel like. And this is another sign that it might want to go up. 31 seconds, 15-minute candle. Simple as that. No gap in this candle as well. It came down, went fully up. There is no gap. There is no gap. There is only gap here. There is no gap on this one. All right. Also, मैं बता दूँ, I've started coming live in the morning. मैं morning में भी live आता हूँ. So if you guys are interested, we trade Asian session, and it's fun. It's fun in the morning. There are new people, early birds and everyone, and market बहुत crazy तरीके से move करता है in the morning. It moves like hell, dude. Okay, so you might want to see that. boring. You can't do at this area. You can't do anything at this area. समझ रहे हो? Okay, this high, market did took this high, okay? It did fucking took that high. There is a gap. It traded into that and then went fully up, okay? Now, there is no gap at this point. The only thing that we are able to see right now, this area, that it might want to come to this area right now to take out this liquidity. Simple as that. And also this level is very important. You see that? अगर ये वाला कैंडल थोड़ा रिवर्स होके अगर उस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट देता है, देन वी विल कंसिडर दिस लाइन, अदरवाइज वी आर गोना कट दिस लाइन. मॉर्निंग में टाइम क्या है? ब्रो, आई केम लाइव कल, आई केम अराउंड 5:30, 5:30 बजे आया था मैं आज. सो इसीलिए मैंने इसका न्यूयॉर्क सेशन टाइम दिया, बिकॉज मॉर्निंग का सेशन ऑलरेडी मैंने कर चुका है.
नाइस, समझ रहे हो, इट इज़ कमिंग टू दैट लेवल. It went up, took this, uh, buy side liquidity I would say, but it's not much. It's a small wick above that area, and right now ये वाला पेंडिंग रहेगा. देखो ये वाला एरिया हो सकता है, यहाँ से इस पे फोकस करना है वाला. ठीक है, कल मॉर्निंग में किस टाइम लाइव आओगे? कल मॉर्निंग मतलब आज रात, राइट? 5:30 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, you do not want to trade in this market. When the market is acting like this, you do not want to trade. Is there any news today for a factory? Is there any news? Let me see. 26th Jan. Okay. Double goose order, nothing major. ठीक है, fair enough. यू डेली 5 लाइव आते हो? हाँ ब्रो, आई मीन ट्राई तो कर रहा हूँ मैं उस टाइम पे लाइव आने का. द ओनली थिंग इज़ दैट सम टाइम इज जस्ट लाइक टू मच वर्क, सो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. बट लास्ट नाइट आई वाज शूटिंग फॉर द, मैं बेसिकली कोर्स शूट कर रहा हूँ पूरे A to Z स्टार्टिंग से एंड तक. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड ऑल्सो आई हैव टू लाइक रिकॉर्ड फ्यू रील्स एंड लाइक some long form content for my YouTube. So I was doing that. उस टाइम तक मैं जगा था. लाइक ओके व्हाई नॉट जस्ट कम लाइव. मतलब मैं सो के नहीं उठा था, मैं जगा ही था द होल नाइट. देन आई स्लेप्ट एट लाइक 6:30 और समथिंग. सो या, फील्स नाइस. स्ट्रीमिंग इज़ फन. स्ट्रीमिंग इज़ फन. Weird. Okay. ठीक है, नाइस. यहाँ तक तो आ ही जाएगा. ठीक है, लास्ट लो ये था. ठीक है, केम बैक, डिड स्वीप आउट ऑन दैट लो. द ओनली थिंग इज़ दैट हमें देखना है क्या यहाँ से रिजेक्ट करता है. ठीक है, क्या इस लो से मार्केट रिजेक्ट करेगा. ठीक है, बॉडी तो ऊपर ही क्लोज हुआ है, सो यस रिजेक्ट कर रहा है. Oh, I see. Wait. Something happened here. Oh shit. Crazy. अगर तुम देख सकते हो 1 मिनट पे there was this gap. Okay,
and it just came and tapped into that and then reversed. बट मुझे पता है क्या लगता है, आई टेल यू, ठीक है. अगर इसको रिवर्स भी करना है, यहाँ से रिवर्स कर सकता है, गुड लेवल, आई डोंट माइंड, ठीक है, कोई इशू नहीं है. बट आई फील अगर रिवर्स करना है तो ये वाले लेवल पे रिवर्स करना चाहिए. मतलब तुम अगर इस लेवल पे भी रिवर्स करते हो यहाँ से, देन इट मेक्स मोर सेंस. तुम समझ रहे हो, यहाँ से डेफिनेटली इट इज़ ट्राइंग टू लाइक इनवाइट मोर बायर्स बाय क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ विक्स. बट आई फील लाइक अगर रिजेक्शन यहाँ से आता तो ज़्यादा बढ़िया रहता. बट डेफिनेटली देर इज़ अ FEG, there is a good level at that area that it might reverse from that also, but we do not have any confirmation, we do not have any setup at this point. ठीक है, I'll be very honest, जब just by looking at the market we cannot be like कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये सब बातें मैं नहीं करता. ठीक है, जब मुझे सेटअप दिखता है, जब मुझे प्रोबेबिलिटी दिखती है, जब मुझे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिखता है, देन आई गो फॉर इट, देन एंड देन ओनली. आई थिंक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम देखोगे कितना अच्छा ये, मतलब गुड लेवल्स यार, ये वाला लेवल भी अच्छा था. 77 राइट, 77 पिप्स, इज इट राइट? सी, FEG डज वर्क, FEG डज वर्क. सो वही यू नीड टू नो कि भाई अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, किस एरिया से कर रहा है, क्यों कर रहा है, एंड नाउ इट इज़ डूइंग दिस. सात सेकेंड एंड देर इज़ अ गैप हेयर. ठीक है, देर इज़ अ गैप, देर इज़ अ गैप. सो अभी एक चीज़ देखना इंटरेस्टिंग होगा, इज इट गोना just tap into that gap and then bounce back, or is it going to directly inverse? It just tapped into that, but वही पूरा कैंडल का वेट करना पड़ेगा. Let me see the bigger perspective. Good sir, good resistance, very good resistance. ठीक है, इन्वर्स हुआ है तो नहीं, इन्वर्स नहीं हुआ है. वेट, यू सॉ दैट इन्वर्स अभी तक नहीं हुआ है. Interesting.
दिस इज अ कंफर्मेशन दैट इट्स वांट्स टू गो दिस लेवल. लेट्स सी अगर जाता है तो. सो अगर ये लेवल को टैप करता है देन व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट. एंड या नाइस मूवमेंट बाय द वे. एटलीस्ट गोल्ड में मूवमेंट तो है. नॉट अ वेरी गुड लेवल जहाँ पर तुम ट्रेड कर पाओगे. सी आई वाज राइट. आ गया उस लेवल पे. But the point is it gonna break this level or is it gonna retest off of this area and then the next distribution is this. कितना था ये वाला. यहाँ से अगर हम ले दे तो छोटा होगा ना. हाँ 48 पिप्स ठीक है. All right. देखो इट डज वांट टू गो टू दैट लेवल. ठीक है वहाँ से एक ब्रेकआउट भी तुमको देखने को मिल रहा होगा. इज इट गोना रिस्पेक्ट दैट लाइन दो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वहाँ से रिस्पेक्ट देता है देन दैट इज़ फाइन. अगर नहीं देता है देन वी हैव टू गो फॉर डिफरेंट प्लान. इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम इस जगह पे ट्रेड नहीं ले सकते बिकॉज इट्स टू कन्फ्यूजिंग. इट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी शुड वेट फॉर. तुम डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं कर सकते थे बिकॉज देर इज़ नो वे दैट यू कैन डायरेक्टली गोना जंप इन टू दिस लाइक विदाउट सीइंग एनीथिंग. मेरी आँख ही दुख रही है इस लाइट से. आई नीड टू वेयर समथिंग. Another thing, another gap at this level. If it's gonna trade into this, see इसको रिस्पेक्ट तो कर रहा है. तुम समझ रहे हो इसको रिस्पेक्ट तो कर रहा है. डिड इट ट्रेड इनटू दैट. इट डिड. अभी जस्ट ट्रेड किया. ठीक है. इन्वर्स करेगा. इन्वर्स करेगा. यस नो मे बी. ओके नो रिएक्ट किया. ठीक है. हमेशा ट्रेड रिएक्शंस पे लेना. No, but the closing is inside the FEG. No, it came up.
ठीक है. Let's go for a quick buy. Okay, let's go for a quick buy. No. Wait. It traded into that area. Hold up. No, nothing. अभी कुछ नहीं. Wait करो. No, we can't buy from here. High possibility of it to break this level. It is respecting this area though, so that's good. Fuck it. Fuck this too. Again, rejecting off of that support. It is breaking off of that support and okay, cool. It did inverse though, यहाँ से. Nice breakout. Might be a reversal from this area. ठीक है. Might be reversal of this area. Then this is liquidity sweep for this level. ठीक है. Okay, nice. I said before also, if it wants to come down, it has to come down to this level. Okay, this is the support. This is the original support that market has to go. It did. उस लेवल पे आ चुका है. Let's go for it now. Okay, we're in. This is a level, and easily the reason behind is this level. ठीक है. That's TP1 by the way. That is TP1. All right. $300 already in. It's gonna reject off of this if it's gonna reject. So TP1 is done. TP1 is done, but it did not close off of this. Shit, थोड़ा ऊपर कर दिया था. यहाँ पे करना चाहिए था. But ठीक है. It will go to that level. No worries. 500, almost $600, right? In that one.
1 2 3, let's go. $600. Okay, bam, $600 in. Okay, TP1 is done. मैंने ऑलरेडी TP1 पे कट कर दिया है. You saw that reaction. Boom boom bam, खत्म. $600 in. Reason was very simple. This was the reason. It's gonna reject more by the way. ठीक है, और रिजेक्शन देगा. TP2 भी हिट होगा इसमें. So yes, 6 मिनट बचे वाले कैंडल को. It has to close above that area and give reaction off of that level. Also you might see that this is like a retest type of form that you'll be able to see. समझ रहे हो? TP1 इसलिए TP1 पे इसलिए बुक किया because we know that TP1 से यहाँ से rejection देगा because there was a support at this level, right? It has to react or reject off of this area. This is a 100% surety wala trade that we took. I was definitely not sure about the TP2, but definitely it has to go to TP2. But TP1 was 101% sure as fuck. There was no issue about it. Okay. Second thing, that there is a FEG at this level and it is reacted off of this FEG. So that means that it is gonna hit TP2 as well. Okay. That means it's gonna hit TP2 as well. So people who are holding, hold that shit, and you'll be able to see some sort of reaction. Okay, the black candle not looking good, but still. Let me tell you, I have already booked the profit, so you can do that too. Right now it is on TP1. अगर TP1 पे profit book करना है तो you guys can do. अगर तुम trade में enter किए हो तो, ठीक है? All right. देखो यहाँ से reversal आ रहा है. That means. Wait. ठीक है, सपोर्ट लेगा इस लेवल पे. चलो, ठीक है. Can you share analysis current pair also? But gold is not always according to our analysis, so we can have some other instrument to trade. Can you share analysis on current pairs also? Which pair? ठीक है, एक बार मुझे बता दो आप कौन से पेयर चाहिए, then we can go for it. Also अगर तुमको गोल्ड को कंपेयर करना है तो अभी AUD USD पे चलते हैं. क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? It does want to move up, right? अगर सॉरी AUD JPY अगर ये नीचे जाना चाह रहा है, राइट, देन गोल्ड वांट्स टू गो अप. गोल्ड ऊपर जाएगा फिर अभी, ठीक है. अगर USD JPY नीचे जाना चाह रहा है, राइट, इट्स फॉलिंग, राइट, यू सी दैट इट्स फॉलिंग. व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? दिस इज नेक्स्ट लेवल. दिस इज ऑलरेडी क्रॉस्ड this one, right? It might reverse. Second, this one is the next level if it wants to come down. अगर यहाँ पर आता है, अगर ये यहाँ पर आता है, then gold will go and touch this level, ये वाला level. Only वहाँ से अगर तुमको rejection देखने को नहीं मिलता है तो ठीक है. But TP1 is done. Okay, the profit has been booked. You can check that. Like I think तुम लोग को दिख गया होगा. Like तुम लोग के सामने ही सब कुछ था. So yeah, that should not been an issue. Let me see AUD USD. Sorry, USD JPY. You saw that यहाँ से एक rejection आया and is it trying to go up about this area? Pairs which have gold price acting like Euro USD JPY otherwise. Yes, we can do that, but अभी फ़िलहाल फोकस्ड हम गोल्ड पे थे तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा था. हमें चाहिए ये कैंडल इसके ऊपर रिवर्स ना हो AUD JPY, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड टू
go to that level. ठीक है, ये ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, it has been done and dusted, we have made the profit off of that trade, it was a crazy trade. समझ रहे हो? AUD USD सॉरी USD JPY USD JPY 2 मिनट्स, 2 मिनट में पता चलेगा. अगर इस लेवल के नीचे USD JPY का जो ये वाला कैंडल है 15 मिनट का, अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है, दैट मीन्स गोल्ड वांट्स टू गो अप. बट इसके ऊपर अगर ये क्लोज, नीचे अगर क्लोज होता है तो गोल्ड वांट्स टू गो अप. इसके नीचे अगर, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है, देन दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट गोल्ड माइट फॉल ऑफ दैट एरिया. जो भी अभी एरिया है, यहाँ से गोल्ड पूरा नीचे आ सकता है. And then it is doing that great sweep into this level. तुम देख रहे हो, it came down, कोई भी गैप नहीं था. okay, there was this gap, okay. जो हमने ट्रेड लिया था, should we continue that? क्या हम कंटिन्यू करें उसको? ओके TP1 इट्स डन बाय द वे. ठीक है, या मैं नहीं, आई वॉज इन, मैं TP1 लेके हट भी गया. सो नाउ वी जस्ट वेटिंग कि क्या ये TP2 तक जाता है. जाता है नहीं जाता है, बट TP1 आई वाज श्योर अबाउट, बट TP2 में जाने में थोड़ा और इसमें टाइम लगेगा. द ओनली थिंग इज़ दैट लेट मी सी दिस. फिर से यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है. Nice, that means the gold wants to go down, sorry, go up. TP1 ऑलरेडी ले चुके हैं बाय द वे इसका. ठीक है, एंड आई एम आउट ऑफ द ट्रेड. मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि ओके, वॉज द एनालिसिस वॉज राइट दैट मार्केट शुड गो टू दैट लेवल, or is gonna just fall from that area. समझ रहे हो? But TP1 has been done. TP1 has been officially done. $600 was the profit for the TP1. Okay, TP1 was very simple, and इसको मैं अभी हटा देता हूँ because we are not looking for the TP2. ठीक है, TP1 was the target. We'll enter again जैसे ही मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है. बट ऑल्सो तुम देखोगे there is a very high chances that gold is gonna continue fall off of this area. I'll tell you why. Okay, when it came down to this level from this, right, this is the next target for it. देख रहे हो? That means somehow USD JPY wants to go up. क्या करेगा ये? इस लेवल पे आएगा most probably, right? Gonna create a support and then gonna create like a double bottom or something like that. Also like a great liquidity sweep. और ये कैंडल पूरा ग्रीन में टर्न हो सकता है वेरी मच सून. देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस माइट टर्न इनटू अ ग्रीन कैंडल. ओके, दैट जस्ट माई प्रिडिक्शन कि ये वाला पूरा कैंडल ग्रीन में टर्न हो सकता है. लेवल ये है बाय द वे. ठीक है, लेवल ये है. ओके, हो गया टर्न ग्रीन में. इसका मतलब गोल्ड नीचे आ चुका है, सॉरी ऊपर जा चुका है. ठीक है, ओके, लेट्स गो बैक इन द गेम, बैक इन द TP2 TP1. फिर से जिन जिन लोगों ने TP1 जिन जिन लोगों ने नहीं ले पाए थे, इफ दे आर स्टिल होल्डिंग, गो फॉर TP1. इट्स गोना हिट TP1 इन नेक्स्ट 2 seconds और 3 seconds. ठीक है,
crazy. Uh, 28 seconds, TP1 is gonna be crushed like never before. Okay, when I say crushed, that means crushed. 18 seconds, ठीक है. इसको मैं हटा देता हूँ ये वाले गैप को, ठीक है. जैसे ही कोई गैप बनता है देन आई लेट यू नो. 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैप बन रहा है नहीं बन रहा है. बन गया, ठीक है. बस थोड़ा अंदर जाके फिर यहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है. गया अंदर, नाइस. दो चीज़ें, इन्वर्स भी कर सकता है. अगर इन्वर्स करता है देन डू नॉट होल्ड फॉर TP2. अगर यहाँ से इन्वर्स करता है डू नॉट होल्ड फॉर TP2, बट अगर यहाँ से डायरेक्टली टैप इन करता है देन ऊपर जाता है देन डायरेक्टली यू कैन होल्ड फॉर TP2, ठीक है. वेरी सिंपल. ओके, 1 TP1 हैज़ बीन ऑफिशियली फकिंग डन. ओके, जिन जिन लोगों ने होल्ड किया था, जिन जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं किया था, TP1 बुक कर लो, ख़त्म करो. डन, लेट्स गो. W is in the chat for TP1, ठीक है. नाउ वेट फॉर TP2. ओके, टारगेट अगर तुम रख रहे हो, ठीक है, टारगेट अगर तुम रख रहे हो, ये वाला अगर तुम्हारा अच्छा खासा अगर होल्डिंग पावर है तो यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा वो नखरे करेगा. दिस इज द श्योर शॉट वाला, राइट. बट इफ़ नॉट देन यू हैव टू वेट फॉर द TP2. TP2 माइट टेक सम टाइम. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. love that move. W is in the chat, फटाफट स्पैम करो. Let's go. TP1 has been finally booked. Okay, $600 has been booked यहीं पर, but it came down, reversing off of that area. The only thing is that you need to focus on right now. You see this. इसीलिए मैंने TP1 पे बुक किया था, because this level is kind of hard to crush. थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे तुमको देखने को मिल सकता है at this point. Okay, reacted off of that area. Nice, respecting that line, and then this candle will decide everything. If it wants to, okay, this candle wants to go up and it's gonna take out the above high. I feel like this is gonna be the scenario for this one. Let's see. But yeah, W is in the chat. TP1 has been booked. So subscribe to the channel. फटाफट like कर दो. जो लोग अभी देख रहे हैं, I want you to like this stream. Subscribe to the channel. Join the community. That link is in description. And also, second thing, what I wanted to tell you. Yep, turn on the notification, because unless you're not gonna turn on your fucking notification, you will not be able to see my streams notifications, right? So yeah. Okay, good rejection. That's why I booked on TP1. Okay, good rejection. अगर यहाँ से फुल्ली इन्वर्स होता है, ओनली दिस, अगर ये फुल्ली इन्वर्स देखने को मिलता है देन इज गोना फकिंग फॉल. ठीक है, याद रखना बस ये चीज़. बट ओनली अगर इन्वर्स होता है तो. बूम 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 बैम बैम. ओके, lot of rejection. I told you it's gonna manipulate off of this area because of that, this line. Yeah, it did. It is doing that. It is doing its work, and yeah. Just hold on. Let me get some water. Okay. Yep. It is rejecting. Lovely that.
there is inverse FEG at that level. What I'm interested in, okay, क्या इस FEG को इन्वर्स करेगा या टैप इन करके डायरेक्ट ऊपर जाएगा? It is wants to go up, let's fucking go now. This is your next level, nobody can stop this. Okay, very close to the TP2. This is the TP2. The TP1 profit has been booked, by the way, already. Okay, again it's rejecting. Let me get some water. Hold up, मैं थोड़ा wait करो. Lovely, let's go. Exactly, right? Nice. W. Oof. चलो ये कर ही देता हूँ ना जो पहले किया था. निभाजो तेरे जीना तेरे बाजो ने जीना. Let me show you what I told you. Yes, I told you this, right? ये बहुत पहले draw किया था. This is a line. It's going up, right? You saw that. I told this. I think I mentioned this like 15 minutes ago. 15 fucking minutes ago I mentioned this. Yep. Check out all the drawings. ये चाहिए था मुझे. ठीक है. Very close to the TP2. If I'm gonna focus on, I'm directly gonna focus on this level. Okay. I'm a numbers guy. W is in the chat. Let's fucking go. किसने ट्रेड लिया था जब मैंने ट्रेड में एंटर किया था? किसने ट्रेड लिया था? जल्दी बताओ फटाफट. टेल मी. Very close to the TP2, by the way. This was the TP1, TP2. Moving pretty smooth. Okay, smooth. Let's go. Boom. You see that? Love that. Okay. Inner world, are you in? Tell me कितने लोग इन थे इस ट्रेड में. ठीक है. देखो ये वाले पे रिवर्स नहीं होगा. रिवर्स होगा तो यहाँ से होगा, ये वाले पे नहीं होगा. ठीक है. तो पेशेंट. इसलिए TP2 ऊपर है, नीचे नहीं है. बुक कर लो. आई थिंक तुम ट्रेड में अगर हो तो बुक कर लो फटाफट. आई थिंक दैट इज़ अ गुड डिसीजन राइट नाउ. Because it is like going on, it's gonna might just like take some time, but like, dude, it's crazy. Subscribe, like, share, comment, do whatever you can right now. One. It's not that deep. It's very basic. Very obvious. ठीक है. Very obvious move. Very obvious trade.
very close to the TP2. I think अब तक हो जाना चाहिए. देखो ये वाले हाई से मुझे मतलब नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ, ये वाले हाई से मुझे मतलब नहीं है, इसलिए मैंने TP2 यहाँ पे रखा है. बट अगर इफ़ यू गाइस हैव कन्फ्यूजन यू कैन लाइक एग्जिट द ट्रेड, बट इट विल गो टू दिस लेवल. हाँ जी, एग्जैक्टली, यू सी दैट. ठीक है, अब कर सकते हो एग्जिट, कोई सीन नहीं. बहुत छोटा सा गैप बचा है, अगर तुम्हें थोड़ा फोमो हो रहा है एग्जिट कर सकते हो, कोई सीन नहीं. ठीक है, इट हैज़ बीन ऑफिशियली हिट. ओके, जिन जिन लोगों ने साथ में ट्रेड लिया था, स्पैम डब्ल्यूज इफ़ यू हैव टुक अ ट्रेड, ये वाला. ठीक है, एंड लेट्स फकिंग गो. TP2 हैज़ बीन ऑफिशियली डन. Simple. Okay, no rocket science, nothing. Very basic trade. Now it might take some time or it might bounce off of that area very much soon, but 15 से 10 मिनट बाद होगा जो भी होगा. अभी थोड़ा बीच में it will manipulate a little bit, it will try to like sort things out, and उसके बाद तुमको एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल सकता है, वो भी हम कैप्चर करेंगे, नो इश्यूज़. एंड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली तुमको अभी देखो, अगर ये होता है तो बाद में मुझे टैग करना, ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के. ठीक है, जस्ट सेइंग, इफ दिस हैपेंस टैग मी लेटर. ओके, दैट्स इट. Let's freaking go. W trade, W setup, crazy. Okay. This light is too much, bhai. Let me get some, fuck it, I'll get later. But how did you like this trade, dude? Tell me. Why? तुम लोग इतने ड्राई क्यों हो भाई? तुम लोग इतने ड्राई क्यों हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा. Are you guys not happy? Are you guys not happy? Why so dry, bro? ठीक है, डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगा, डोंट वरी. जस्ट बिकॉज इतना बड़ा विक दिया तो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगा, फिल करेगा. ओके, फिल करेगा. लवली लेवल. शुड आई कट दिस एंड शुड आई कट दिस ऑल्सो? क्या इसको हटा दे? लेट मी, इसको थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ. नॉट सो इम्पोर्टेंट लेवल को मैं हटा देता हूँ. ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ. ठीक है, अभी फिल होगा पूरा. एंड देन या आई थिंक क्रेजी मूव इसीलिए था. टाइमिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. जस्ट सेकेंड.
let's fucking go. TP2 has been officially booked now. Okay. Come on, dude. How many pips? 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 What is this? What? I did zoom in, right? 178. How much it is? Crazy. Okay. Let's go. इंटरेस्टिंग होगा ये देखना जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, दिस एंड दिस, और इट्स जस्ट गोना लाइक स्वीप दिस आउट एंड देन कम डाउन. समझ रहा हो? वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज इफ मार्केट इज गोना गो इन टू दिस जोन, दैट इज गोना बी इंटरेस्टिंग एज फक. तुम समझ रहे हो? लेट्स गो. वेरी नाइस, स्टिल गोइंग अप. ठीक है, अगर मैं इसको अभी तक होल्ड करता तो देन वी वुड हैव लाइक ट्रेडेड दिस. समझ रहे हो? But yeah, we booked very early. That is TP1, because I know that it's gonna manipulate, and it did manipulate off of this area. It did manipulate. ठीक है, क्योंकि ये कैंडल जब ऊपर गया था, it did came down, and yeah, did some little tricky ass things. But हाँ जी, just a second, boys. I'm here. Just a second. We're back. I'm a numbers guy, okay? Nice. Looking nice. You saw that? Go back to the stream, okay? Check what I said about this trade or about this movement. I already mentioned that if it wants to go down, it has to come to the previous support and then go up, take out the liquidity that is above, resting above, and then it might take out that liquidity and then it come to the it can come down and take like a sell side liquidity. You're getting my point? I mentioned that beforehand. So yeah, again, can I tell you something? It's going up. It's going up. ठीक है? Wish we would have hold that shit, but no issues. Okay, it's in good zone. ठीक है? I would not say not bad, but low chances of rejecting, high chances of continuous bullish movement. ठीक है? And अगर तुम 1 minute time frame पे आओगे, you will be able to see this was a resistance, right? ऊपर गया, 1 minute पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी retest कर रहा होगा. Exactly. ठीक है? The only thing is that जब तक इस पॉइंट पे नहीं आता तब तक हमें नहीं पता चलेगा इज इट अ रीटेस्ट और इज इट लाइक डायरेक्टली वांट्स टू कम डाउन. ठीक है? $12.30 London high, right?
I mean pre-London high. लाइन मार्क कर देते, ठीक है, बेटर रहेगा थोड़ा. ऑल्सो अगर तुम देखोगे there is a 1 minute FEG, so it has to come to this level and then we'll see what's gonna happen next. ठीक है, so the target is right now this. ठीक है, too good at this. और थोड़ा नीचे, और थोड़ा. उस बॉक्स में चाहिए. क्या बोला था, उस बॉक्स में चाहिए. ठीक है, is it gonna inverse this FEG? ग्रेट स्वीप, ठीक है, ग्रेट स्वीप नो डाउट, समझ रहे हो. द ओनली थिंग इज दैट अगर एक स्वीप होता है उसके बाद भी एक सेटअप बनना चाहिए, तब जाके हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं. तुम समझ रहे हो. सॉरी, इसको मैं हटाया क्यों. हाँ, 1 मिनट में इट केम डाउन, ठीक है, टैप्ड इनटू इट. सी, आई टोल्ड यू राइट, इट हैज़ टू कम टू दिस पॉइंट. इट डिड टैप्ड इनटू इट. इज इट गोना रिजेक्ट और इज इट गोना कम टू दिस लेवल. अगर इस लेवल पे आता है देन देर इज़ हाई चांसेस दैट इट माइट कंटिन्यू गो डाउन. इस लेवल पे अगर आता है तो, बिकॉज द ओरिजिनल सपोर्ट इज दिस वन. ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल सपोर्ट. there is gap, no gap. 1 minute, 5 minute, the candle is still building. okay, यहाँ से तुमको एक अच्छा खासा रीटेस्ट देखने को मिल सकता है. बाय द वे, ये वाला हाई वो कंसिडर नहीं करेगा. अभी जो हाई करेगा ये वाला हाई कंसिडर करेगा मोस्ट प्रोबेबली, ये वाला लेवल. तो इसको याद रखना, ये वाली लेवल को. मैं इसको हटा देता हूँ एक बार. ठीक है, इट डिड ट्रेड इनटू दैट एफईजी, समझ रहे हो. सो यहाँ से बस वेट कर रहे कि यहाँ पे थोड़ा और पुश कर जाए. ठीक है, 2 रिएक्शन. चलो,
a second. Good rejection. ठीक है. It did reverse off of this FEG. समझ रहे हो? तो 5 मिनट पे तुमको ये देखने को मिलेगा. बट इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा और यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा. तो इसीलिए यहाँ से देर आर हाई चांसेस दैट मार्केट विल कंटिन्यू मूविंग अप. समझ रहे हो? इट डिड ट्रेड टू दिस. ओके, इट हैज़ टू गो अप. इट हैज़ टू गो अप. चलो, इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं. Let's not jump to the conclusion right now. ठीक है. 1:2 तो कर ही सकते हैं यहाँ से, अगर तुम एंटर करना चाहते हो विथ अ लो रिस्क एंड टाइट स्टॉप लॉस यू कैन एंटर. ठीक है. वन ट्रेड इज ऑलरेडी डन. दिस इज लाइक अ सेकेंड ट्रेड. गोल्ड. All right. One is to 1.5. I think it's almost like that. Okay, let's see what happens now. W is in the fucking chat. फटाफट. ओके, डोंट स्पैम. वेट करो. जब तक टीपी हिट नहीं होता तब तक वेट करो. ठीक है. चलो, we are in officially. Okay. The only thing is that we need to wait for is one more green candle. Okay, one more green candle. The risk is very low for this one. The risk is very low, and yeah, let's see how it's gonna trade. It came back to take the SL. Good. That's why you should have at least like a good amount of SL.
Still in. Keep the eye on this trade. Just a second, I'll be back. What was that? Oh shit. Okay, it did not go well, definitely. But it's gonna reverse off of that area very much soon. So no stress, okay? Sorry, my Wi-Fi got disconnected. Stop loss should have been bigger in this case, but no worries. Eventually it has to go up. The only thing is that we need to wait for some sort of confirmations. Fuck.
Sorry boys, थोड़ा गर्मी हो रहा था, but we're still holding this for some reason. Okay, um, it just there is a liquidity at that side, and then high chances of market going to that liquidity. That's why I was like taking a risk on this, because we have made profit in trade like this before. So yep, there should be non issue. There should not be an issue. All right. No point of holding this right now. Fuck it. Not holding this anymore. That was a L. I take that L, but yeah, that's how it is. We won one trade, and that's the second trade that we entered. It did not go well, but eventually that uh, it's gonna come to that level, and most probably I told you, right, this is the next level that it has to target. Okay, and eventually I think this is the point that market will go to that level very time soon, but it's gonna manipulate a lot at this point. Okay, so I might come live in the evening and we might take some trades. There is a lot of learning here. Okay, we should have not gone for the second trade just because it is like coming to that level. We would have waited for some sort of confirmation. At least if it's gonna break this level, then we would have gone into it, but it was too early. But that's fine, that's completely fine, that's completely learning. And yeah, definitely, if I find some good setups, I'll come back, and morning में हम आएंगे, and कल भी you'll be able to see me live, and in the afternoon also I'll try to come live. ठीक है? And yep, that's it for today's stream. I hope you enjoyed, you learned something from my mistakes or whatever it is. This is how it is in front of your eyes. Okay, there's no, okay, crazy. Okay, imagine we would have just fucking hold at this position. Nice, lovely. Okay. Okay, chalo. Thank you so much for joining the live, and I hope I'll see you very time soon. Bye bye.